A very good morning class. Today I am going to start chapter agriculture. This is for class 8th and 10th also. This is a very basic chapter and it is related to your day to day life activities. And agriculture is the prime sector of our Indian economy. Everybody knew about it. Without agriculture we cannot imagine our life because agriculture fulfills the basic necessity of food also. And for our survival skill it is a very important sector and it is a feeder of the industrial as well as it support the whole economy. Without agriculture sector we can't imagine about our development perspectives and other or you can say other criterias, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसा बेसिक नीड है हमारे इंडियन इकोनॉमी का जिसमें इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और हमारे अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है? अगर हम एक आम आदमी की भाषा में बोलें, एग्रीकल्चर इज़ द मेथड ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक. और अगर हम एक जोग्राफिकल एक्सपर्ट की लैंग्वेज में बोलें, दिस इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक. Agriculture was the key development in the rise of secondary sector as well as the sedentary human civilization, whereby farming of the domesticated species created food surpluses that enable people to live in cities, and the history of agriculture began thousands of years ago at the time of early man. We can already studied about the we also studied about the early man stages and all that Mesolithic and Paleolithic age, Neolithic age, and what are the aspects of agriculture at that time, and what were the developmental perspective as well as what were the inventions related to the agriculture sector. और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और उसको मॉडर्नाइज करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, और दूसरी बात अगर हम कहें हमारे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने और फार्मर्स का उसके बीच में कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस chapter, or you can say the title of the chapter. Next one is importance of agriculture. Agriculture provide food, fulfill our basic necessity, that is food. Without agriculture we can't imagine and we can't think about the survival of our life. ठीक है. It provide raw material to industries. How it provide raw material to industries? Every industry dependent upon agriculture. For example, शक्ति भोग आटा, शक्ति भोग बेसन. आटा किससे बनता है? वीट से बनता है. अगर वीट की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कैसे अपने बैनर्स के साथ या अपने ब्रांड नेम्स को प्रमोट कर सकती है और कैसे वो अपना पैसा कमा सकती है? रियल ट्रॉपिकाना फ्रूट जूसेस, फ्रूट कल्टीवेशन नहीं होगा, फ्रूट नहीं हम उगाएंगे तो फ्रूट की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बिना हम कैसे रियल और ट्रॉपिकाना जैसे ब्रांड्स और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं, उनको अवेल कर सकते हैं. Agriculture provide very important role in all the aspects. Same, it provide also raw material to the pharmaceutical as well as the cosmetic industry. How is it? Your Himalayan neem face wash. अगर नीम ही नहीं होगा, हर्बल प्लांट्स नहीं होंगे तो आप कैसे सोप, डिटर्जेंट्स, फेस वॉश, अपने मॉइस्चराइजर, लोशंस, आप देखिए एलोवेरा लोशन जो कि आप विंटर सीजन्स में फॉर अ ड्राई स्किन यूज़ करते हो. देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द forestry department, or you can say these industries are depend upon the herbal plants for the production of their cosmetic products. Same in a pharmaceutical industries. Pharmaceutical industries are those industries which produces medicines. पुदीन हरा, ठीक है, डाइजीन, जेलोसिल. आप इनो पीते हो, उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. आप हाजमोला खाते हो, उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. वो कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है. इंक्रीज इन ट्रेड, हर साल हम लाखों में प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इंडिया शुगर केन में सेकंड नंबर पे है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. उसके बाद इंडिया होल्ड फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, स्पाइसेस, एंड देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स. और हम वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरस्टेट लेवल पे, डोमेस्टिक बाउंड्रीज में बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं. एंड वेल एज इट इंक्रीजेज आवर नेशनल इनकम, it increase our per capita income, create employment opportunities. How agriculture create employment opportunities in other sectors? Without agriculture we can't imagine our industries. Just because of agriculture industries can work
or you can say produce their materials and able to survive. तो जब भी कोई इंडस्ट्री खुलेगी ऑब्वियसली वहाँ पे काम करने के लोगों की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर अदर सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहा है. मेन स्टे ऑफ इंडियन इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. और विदाउट एग्रीकल्चर वी कांट इमेजिन अबाउट आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर नहीं है तो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है. Now we are going to discuss about the major crops of India. For 10th class they already studied this chapter in their previous class 8th. Okay, जिसमें आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. बेटा, make your presentation very very effective and very very impressive and convenient to you also to learn that thing, to memorize that thing and understand that thing. Without understanding you are not able to write and retain all that thing in your mind. So first of all you have to be understand the basic concept of the major crops of India. In agriculture, while we are discussing the topic of agriculture, we just follow the basis of differences and the major crops of India. Okay, how we bifurcate all the products, all the crops of India on the basis of some relief features, that is temperature, rainfall, soil, climate, seasons, areas. And it is sufficient for you all to, you can say, you write these things in your question paper, or you can save at the time of exam, or as well as for your knowledge base. This is a basic element which is necessary for the production, for the cultivation, for the agriculture of for the agriculture practice of these crops. Without these relief feature, it is very impossible to grow them, impossible to cultivate them, and impossible to avail them. Okay, so first is temperature. Temperature for rice 22 to 32 degrees Celsius, for wheat 10 to 15 degrees Celsius at the time of sowing, and 21 to 26 degrees Celsius at the time of harvesting and ripening. Next is your millets, 27 to 32 degrees Celsius, grams 20 to 25 degrees Celsius. It need dry and mild cool climate. Sugarcane 21 to 27 degrees Celsius. And the rainfall, rice for the rice cultivation, rainfall required 150 to 300 centimeter, wheat 75 to 100 centimeter, millets 50 to 100 centimeter, grams 40 to 45 centimeter, and for sugarcane 75 to 150 centimeter. Sugarcane is that crop which need high rainfall because the water requirement is more as compared to other one. Same as rice also. Next is soil. Deep clay and loamy soil is best for the cultivation of rice. Well-drained, fertile, loamy and clay soil for the cultivation of wheat, and the millets are grown in that area where less sensitivity to soil deficiencies, and they can be grown in inferior alluvial or loamy soil. Grams for the loamy soil. Sugarcane dip-rich loamy soil. Climate. Rice require hot and humid climate. Wheat require cold climate at the time of sowing, and there is some warm climate and some you can say some amount of humidity at the time of harvesting also. They also millets also needs a hot type of climate. Grams moderate type of climate. For sugarcane, hot and humid type of climate. Seasons. The sowing season of rice is June to July, and wheat for winter, and millets is September to October, grams October to March, sugarcane October to March. Areas. The major producing areas of rice is West Bengal, UP, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana also, and wheat is Punjab, Haryana, UP, Himachal Pradesh, and millets Uttar Pradesh, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra and Gujarat. And the major producing areas of gram, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana and Maharashtra. For sugarcane, UP, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Bihar, Haryana and Punjab. I hope you understand all the things, and this is your you can say flow chart or your comparative table, and you can easily learn it, you can easily understand it, और आप एग्ज़ाम में इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आए
आप सिंगल कॉलम वाइज या रो वाइज भी इसको उठा सकते हैं, या और दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग योर 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड दिस इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल चार्ट फॉर यू ऑल. आप इसको जर्नली भी 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको मतलब कुछ एक क्रॉप के ऊपर आ जाए, जैसे वट आर द रिलीफ फीचर्स बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, तो आप ये पूरा का पूरा कॉलम उठा के पूरा का पूरा रो उठा के लिख दीजिए. ठीक है. सो आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज योर फाइबर क्रॉप्स. फाइबर मीन्स जिनसे कपड़ा बनता है या किसी अदर आर्टिकल्स में हम यूज़ करते हैं. दैट इज योर कॉटन एंड जूट. एंड जूट is also known as the golden fiber of India, and the temperature requirement for cotton is 21 to 30 degrees Celsius, and for jute is 24 to 37 degrees Celsius. Rainfall 50 to 100 centimeters Celsius, sorry 100 centimeter, and for jute is 150 centimeter. Soil, black soil is the best soil, and the you can say the मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इट इज़ अ प्रीशियस सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. जूट, for jute it clayey soil is the best soil for the cultivation of jute. Climate, it requires hot and humid climate. Same, jute also require hot and humid climate. And the major producing areas of cotton: Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh. And jute: West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Uttar Pradesh, Tripura, Meghalaya, Andhra Pradesh, Kerala and Maharashtra. Next is your beverage crop, that is tea and coffee. The temperature requirement for the cultivation of tea is 20 to 30 degrees Celsius, for coffee 15 to 28 degrees Celsius, and the rainfall requirement is 150 to 300 centimeter for tea and 150 to 250 centimeter for coffee. Well drained and deep friable loamy soil is best for the cultivation of tea, and well drained, deep, friable loamy soil is also best for the cultivation of coffee. Climate: tea requires warm, humid climate, and coffee required hot and humid climate. And the major producing areas of tea is Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Tripura, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Karnataka, Sikkim, Nagaland, Uttarakhand, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Bihar, Odisha. And for coffee, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Thank you so much. I hope you learn so many things and you can get better understanding about the major crops of India, cereals, beverages as well as fiber. And please, if you have any kind of query and any kind of confusion, you can ask your question in the comment box. Okay. And you can subscribe, like and share my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma, and please press the bell icon. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of your next video. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.